In our last video we talked about feed forward neural net, लेकिन उसे implement करने से पहले we are going to talk about back propagation, which is the backbone of the neural net. First thing is, what is back propagation? Back propagation is a method used in artificial neural networks to calculate a gradient that is needed in the calculation of weights to be used in the network. Back propagation is shorthand for the backward propagation of errors, since an error is computed at the output and distributed backwards throughout the network's layers. In simple words, backpropagation is also an optimization technique like gradient descent. It tries to minimize the loss function by adjusting the weights of layers with the help of errors. We have seen how feed-forward neural network works. We pass the input to the input layer, then input layer passes the input to hidden layer, weights are multiplied and bias is added, and then result is passed through an activation function, and on the basis of some threshold value activation function fires, and that result is further passed to next hidden layer or output layer. At the output layer we calculate the predicted output. Now the question is where these weights come from. Think of these as the theta parameters that we used in regression algorithms. It means हमें input पता है, we know output since it's a supervised learning problem. Let's say we also know biases जिनकी value है 1. But what about weights? Yeah, you are right. We will randomly choose the value of weights and compute the output. लेकिन क्या हम randomly assigned weight से अपना desired result gain कर सकते हैं? This is where backpropagation comes into play. We find the predicted output using randomly assigned weights, then we compare our actual y with predicted y and find the error. In this case, error is actual output value minus predicted output value. We know that this error is due to the randomly assigned weights, तो इस एरर को वापस न्यूरल नेट में प्रोपेगेट करना होगा और वेट्स को एडजस्ट करना होगा ताकि दिस एरर टर्म शुड बी मिनिमाइज्ड. क्योंकि हम इनपुट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं इसलिए फीड फॉरवर्ड, एंड एरर को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं इसलिए बैक प्रोपेगेशन. नाउ यू कैन सी ये एरर हमें हिडन लेयर पर पास करना है. हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लिया कि predicted y equals to 0.6 and actual y is equals to 1, तो एरर होगा 0.4. अब सोचने वाली बात यह है कि 0.4 को हिडन लेयर तक कैसे पहुंचाएं. एक काम कर सकते हैं कि हिडन लेयर में जितने भी न्यूरॉन्स हैं उन सभी को 0.4 असाइन कर दें, बट दिस इज वेरी बायस अप्रोच. ऐसा क्यों है वो मैं अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वेट्स रिजल्ट का कंट्रीब्यूशन डिसाइड करते हैं, जैसे कि A1 से 20% एंड A2 से 80% रिजल्ट आता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज थिंग्स एंड आई रिकमेंड कि प्लीज़ एक बार प्रीवियस वीडियोस भी देख लें ताकि आगे के कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो. बैक टू द टॉपिक. सिंस रिजल्ट में A1 एंड A2 का कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि एरर में भी इनका प्रोपोर्शन इक्वल नहीं होगा. This was the basic introduction of the backpropagation algorithm. In the next video, we'll be talking about mathematics behind this method. So stay tuned and please like, share, subscribe and comment. Thanks for watching.